Thousands of men led their lives, and thousands of mothers sacrificed their sons to bring freedom to India. Let us value and celebrate it with pride. Good morning, everyone. Respected Principal, Mrs. Shireen Francis, Administrator, Commander Jose Vargas, Vice Principal, Ms. Anida Kuriappan, teachers, and all my dear friends. Welcome to the Independence Day celebration. Now, I welcome Nandana Kishore to speak few words. Freedom in the mind, faith in the words, and pride in our hearts. A very warm good morning to one and all. Today, we all have gathered here to celebrate the 75th Independence Day. On this day, the heart and the soul of every Indian connects. The evolution of the pandemic has changed the conditions of human life. Fear and hopelessness exists in every stage of our existence. But let us not forget that difficult days are the times when champions are born. In the words of Napoleon Hill, every adversity, every failure, every heartbreak carries with it the seed of an equivalent or greater benefit. A deep resemblance can be drawn between this philosophy and the struggle for the independence of our motherland. Therefore, this special day is to remember and salute the sacrifices of those brave sons of Mother India. We are very fortunate that such brave sons were born in India, who had suffered many troubles to get India free. And this freedom is best enjoyed when we wake up to the truth that with freedom comes the word responsibility. And with these two words, we can create a better world to live in. God speaks in the silence of heart. I now request everyone to join your hands for the prayer song. शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्. Now I welcome Chrisanne Benson to deliver the welcome address. Happy Independence Day and a very warm good morning to everyone present here. I'm extremely honored to have the privilege to address this virtual gathering. Netaji Subhash Chandra Bose's desire to die for making India live inspired each citizen of India to fight for their freedom from the British rule. Independence Day is a national festival of India which we celebrate to remember the struggles and sacrifices of our freedom fighters and martyrs for a long span of 200 years. We enjoy a better future today because of all their efforts and contributions. This day makes every citizen of India remind how we all Indians should glorify India's past,
present, and future. Today, as we celebrate our 75th year of independence, I would like to extend a gracious and inclusive welcome to our beloved principal, Mrs. Shireen Francis. It's your sense of dedication which creates an apt platform for us to grow more mentally and spiritually. It's my privilege to extend a hearty welcome to our administrator, Commander Jose Varghese, who has been a pillar of support for all of us here. It's my ardent pleasure to welcome our Vice Principal, Mrs. Anita Kuriappan, for her unwavering commitment at the Delta study. I would also like to welcome the teaching, the non-teaching staff, and all my dear friends to this propitious celebration. Now, we will have an auspicious flag hoisting ceremony. Our principal, Mrs. Shireen Francis, will hoist the national flag. Flag salute. Many feelings may come and go, but the feeling when we hear a national anthem that raises our goosebumps is irreplaceably magical. I now request everyone to stand up for the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे My heartfelt wishes on the 75th Independence Day. Today, we commemorate the 75th Independence Day of our great nation. This day reminds us about the pain of being enslaved, the strength of unity. It also defines the sacrifices made by our freedom fighters. It is our responsibility as proud citizens of the country to sincerely perform our duty and progress together for the growth and development of our nation. Democracy gives us the right to live freely as a proud citizen of a country. Today, we are fortunate to live in one due to the vision and sacrifice of our freedom fighters. On this day, we should take an oath that we will always be patriotic citizens of our motherland. Being the youth, you are the future of our country. As a great soul Mahatma Gandhi, the father of the nation, said, "If I have the belief that I can do it, I shall surely acquire the capacity to do it, even if I may not have it at the beginning." The future depends on what we do in the present. Let's utilize our today for a better tomorrow. Let us take a pledge to see that this country scales to the premier seat in the Committee of Nations. India has always had a vision and a message for the world. From the very beginning of our civilization, we have believed that the world is one and humanity is a single family. Dear children, it is our duty to preserve the freedom we got.
It is our responsibility to hand over a better India to the coming generations. Let us not forget to pay homage to our soldiers who sacrificed their lives to safeguard our freedom. Let us salute our corona warriors who are sacrificing their freedom to save lives. Even the smallest of the effort counts, so keep doing a little good every day, and one day we will have a country independent from all its problems. Let me conclude by quoting the great soul Nelson Mandela, "For to be free is not merely to cast off one's chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others." Thank you. Thank you, ma'am. Now, we have a speech in Hindi by Diya Manoj Khona. इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को सदा अपनी आंखों में बसाए रखना। आदरणीय प्रधानाचार्य श्रीमती शिरीन फ्रांसिस, प्रशासक कमांडर जोस वर्गीस, उप प्राचार्य श्रीमती अनीता कुरियप्पन, शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। हमारी मातृभूमि भारत का 75वां साल वास्तव में हमारे लिए गौरव का क्षण है। 15 अगस्त का दिन उस ऐतिहासिक दिन को चिन्हित करता है जिस दिन भारत माता की परतंत्रता की जंजीरें काट दी गई। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि हमारे नेताओं को श्रद्धांजलि देने और उनके द्वारा किए गए संघर्षों को याद करने के लिए हम प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, तब हमारी सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। हम भारतवासियों को विदेशी ताकतों की गुलामी में रहना मंजूर न था। हमारे नेता लोगों के अधिकारों के लिए चट्टान की तरह खड़े रहे और उन्हीं की वजह से आज हम स्वतंत्र हैं। हम सभी हमारे नेताओं के ऋणी हैं। उन नेताओं को सलाम जिन्होंने एक स्वतंत्र और मुक्त भारत के मूल्य और महत्व को समझा। आज का दिन एक राष्ट्र के रूप में हमारे वास्तविक मूल्य की याद दिलाता है। आज हमें ये प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम अपने भारत को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। हमें अपने देश को दुनिया में शक्तिशाली और सम्मानित बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। आइए एकजुट होकर कड़ी मेहनत करें और अपने देश को प्रगति के पथ पर ले चलें। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। जय हिंद, जय भारत। A speech in Malayalam by Maria V. Rajesh. മാന്യ സദസ്സിന് വന്ദനം. 2021 ഓഗസ്റ്റ് 15-ാം തീയതി നാം ഭാരതത്തിന്റെ 75ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് അടിച്ചമർത്തലിനെതിരെ പോരാടി നമ്മുടെ അവകാശമായ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുത്തതിനുള്ള ആവേശകരമായ ഓർമ്മപുതുക്കലാണ് ഓരോ ഓഗസ്റ്റ് 15-ഉം. രാജ്യത്തെങ്ങും ത്രിവർണ പതാക വാനോളം ഉയർന്നു പറക്കുമ്പോൾ ഭാഷയുടെയും ദേശത്തിന്റെയും അതിർത്തികൾ മറന്ന് ഓരോ ഭാരതീയ പൗരനും ഒന്നാവുകയും അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സുവർണ നിമിഷം. രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ട് 7 പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കുതിച്ചും കിതച്ചും ഇന്ത്യ വളർന്നു. ഒരു കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് കോളനിയായിരുന്ന ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യ രാജ്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്ന അനേകം മഹാരഥന്മാരെ നാം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭാരതപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധി, ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ശില്പിയായ ചാച്ചാജി നെഹ്റു, ഭഗത് സിംഗ്, രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ, സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്നിങ്ങനെ എത്രയോ മഹാരഥന്മാർ. അവർ നമുക്ക് തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ദീപശിഖയെ കെടുത്താണ്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. അവർ കാണിച്ചു തന്ന ഐക്യത്തിന്റെ പാതയിൽ നമുക്കും പിന്തുടരണം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ഒത്തൊരുമയോടെ നിൽക്കാം. ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. Now, a speech in English by Sneha Robert. India is the cradle of human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great-grandmother of tradition.
Our most valuable and most constructive materials in the history of man are treasured up in India only. Words by Mark Twain. Good morning to all. Respected Principal Mrs. Shireen Francis, School Administrator Commander Jose Borges, Vice Principal Mrs. Anita Kuriappan, teachers and my dear friends. A very happy Independence Day to all. 15th August 1947, the day Indians across the world had their heads held high. The day Jana Gana Mana sounded the most melodious. The day India became a role model for many nations. Independence Day heralded the end of British rule in 1947 and led the pathway to a free and independent India. It is indeed the most significant day in Indian history as it marks the sacrifice, bravery, hardship, and patriotism shown by our freedom fighters. It is a day to celebrate our freedom by paying tribute to all national freedom fighters who gifted us this beautiful land. Today, after 75 years of independence, our country is moving towards progress in every field. So it is our prime responsibility as proud citizens of this country to sincerely perform our duty and progress together for the growth and development of our country. Keeping the sacrifices of our ancestors in mind, we should take an oath to carve a better future for our motherland. May the tricolor always soar high. Jai Hind. Patriotic song by our school choir. आए मेरी ज़मीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सही महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे ज्वालावली रक्तंदर നെഞ്ചിൽ പടരാ ഒരു താരാഗണമാകാശം ചിന്തിച്ചിടരാ യോദ്ധാക്കളിലാ യോധന വീരം പകരാ രണമരുള भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। ए वतन वतन मेरी आबाद रही तू ए वतन वतन मेरी आबाद रही तू ए वतन वतन मेरी आबाद रही तू ए वतन मेरे वतन ए वतन मेरे वतन നെഞ്ചിൽ തുടികൊള്ളുന്നൊരു ശബ്ദം ജയ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കാശ്മീരും പഞ്ചാബും ആസാമും ഒന്നല്ലോ ഒന്നല്ലോ നാം ഇന്ത്യക്കാർ माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Now we have a patriotic dance performance. है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे ओ वतना में
सतनामे तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। ये नया हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है? कमांडोस, who are we? इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, but we will bloody hell finish it. How is the Josh? How is the Josh? I said how is the Josh? Good. जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा। जाग भाग भाग बच सके तो बच ले आज, आंधी है ये ज़लज़ला है पूरे जोर कौन रह सका खड़ा। I now request Joshua Sebi to say the vote of thanks. G.K. Chesterton said, and I quote, "I would maintain that thanks are the highest form of thought, and that gratitude is happiness doubled by wonder." Let me begin by wishing a happy Independence Day. The innovative effort to celebrate this historic day has finally come to an end. It is befitting to end this program with words of gratitude and appreciation. I would like to extend my heartfelt gratitude to our beloved principal, Mrs. Shireen Francis,
Administrator Commander Jose Verghese, Vice Principal Mrs. Anita Kuriappan, our Physical Education Department and teachers who have worked relentlessly to make this event a feasible one. I would also like to thank the participants who have actively participated. Finally, I thank all the parents for their immense support and faith. Let's not forget about the sacrifices made by the freedom fighters. Remember the guidelines and make every citizen safe. Jai Hind.